Greetings to one and all present here. This is Swati Yadav from Example, a student democratic platform with a mission of creating doctors with the help of toppers. We have Dr. Aditya Sharma with us, a first year MBBS student currently pursuing his degree from the prestigious Maulana Azad Medical College, Delhi. Now, I'm sure that this college requires no prior introduction, and the same applies to the efforts taken by the aspirants to get in. Today, we have someone who has managed to take enough efforts and be who he is today. Very hearty congratulations, Dr. Aditya, for your achievement. I'm sure that your journey must have been a tough one, and we would like to know more about it. So, without any further ado, let us begin with the interview. So, my first question to you is that what inspired you to get into a medical field? So, first of all, good evening, ma'am. So, what inspired me is my parents. First of all, my parents inspired me because they wanted me to get into this career in medical profession, and also it is a very noble profession. The respect that we get in this kind of profession, this kind of respect we can't get in any other profession. So yeah, and also I do have an interest in science and all, so that's why I decided to get into it. That's right. Doctors are equivalent to God. So, because they save lives. So, when did you start preparing for NEET and what was your strategy? So actually, it's quite complicated to say because I got to know about NEET in class 11th, but I started the preparation, full-fledged preparation in class 12th, and that too in the middle of the class 12th, because I didn't have that proper knowledge and that proper material to study properly about NEET, because at that time there was not much online material available. So yeah. And about my strategy, the strategy was quite simple: to focus on the concept and then solve the questions. Many students do the mistake that they start solving questions very early, and they do not try to understand the concept properly, and they think that only solving questions will get them into the will help them get into good college or something like that. So you started late and yet you were able to cover up. So that will be like a motivation to the ones who start late that you can still do it, still doable. Yeah. So there were like 15 lakh students who gave NEET, but not everyone cleared the exam. So what was something that different approach you used in order to clear the exam? What was something different you did as compared to the rest of the children? Actually, first of all, students who are preparing for NEET do fear from physics, and I love physics first of all, and I prepared it till J Advanced level because I was also interested in giving J Advanced as well. So I prepared physics and chemistry till that level. So I didn't have any problem with physics and chemistry, and everybody likes biology, and everybody gets good marks in that. So if a student gets good marks in physics and chemistry, then of course he'll be able to crack NEET with good marks, I guess. So that's what fit in my case. That's right. It's an amazing approach, I would say. So, what was your parents' reaction when they got to know about your marks and your selections? How did they react? So yeah, they were happy, and they knew that I'll clear the exam this time, because in the first attempt I got 603. So they were guessing that yeah, I'll be able to clear in the second attempt, and yeah, they were happy, and that's it. Okay, so you took a drop, like second attempt, in order to give NEET. So from 603, you went up to 682, which is actually a good, remarkable change, you can say. Yeah. So my next question to you is that how did you balance your preparation as well as your personal life? Because obviously the portion is huge. I need to have a balance between the two. How did you manage that? So my personal life, I don't have much to say about my personal life. I don't have anything in my personal life, and due to COVID at that time, I don't have to do anything else other than studying and all. And yeah, just scrolling Instagram, nothing else. So you did have leisure time, thoda spend करने के लिए अलग से. Okay. So the NEET 2021 paper was like changed just 2 months prior. Like 2 months prior, you got to notice that there is more questions and less time. So how did you manage that? What different you did so that you could cope up with the change?
So one should think of it as an advantage, I guess, because you get options and you can choose from them. Like if you are not able to solve a question, you can leave that and do the other question which you know very well. So that is an advantage. And yeah, we got time about I guess 2 months. So in that time we can do the test on that pattern, on the new pattern, and then we'll be able to solve the question on that pattern, I guess. That's right. So you did a lot of in order to cope up. Yeah, I guess 10 to 15 tests are enough. Full Okay. test. Okay, so how did the COVID pandemic affect your preparations? Well, it gave me quite a lot of time, but the thing is, I was not able to interact with any of my friends, and that I didn't like, because studying alone feels quite like I don't like it, because Hmm. it feels alone. Yeah, so that's why I was getting bored, and then I was deviated from my studies as well. But then I just started, when exams came closer, I just started to focus on studies. And yeah, in the last 2-3 months, I fully focused on the preparation, and that's why I was able to clear the exam. That's right. The COVID pandemic was pretty lonely because, yeah, but you handled it in a good way, so could make up. So my next question to you is that now there's just 2 months left for the 2022 exam. So what would be some last moment strategies and tips you would like to give students so that they don't overwork themselves? So in the last 2 months, one should not study something new, first of all, because if you start studying something new, that will, you will not be able to solve the questions regarding that topic, because you don't have much knowledge about that topic, and not much practice as well. So you should practicing what you have studied in the recent in the past 2 years. So you should keep practicing that only, and keep revising your notes, and um, keep giving tests. That's very important, because tests are very important, because when you'll give exams, when you'll give the NEET exam, the test that you have given, that will play a very important role, because the mistake that you do in the test will not be repeated in the exam. That's right. You get to know your mistakes via practice. So Yeah. practicing is very important. तो आपका एडवाइस क्या होगा एक 11वीं के बच्चे को, एक 12वीं के बच्चे को और एक रिपीटर को? तो अगर मैं बात करूँ 11th स्टूडेंट की, सो वो उसको तो एकदम सिंपल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो 11th में है, तो उसके पास पूरा 2 साल है, ठीक है। तो अगर वो एक कोई कोचिंग, कोई बैच, कोई मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन जो उसका मतलब प्रेफरेबल ऑप्शन है, तो वो उसको ज्वाइन करे और वहां से एकदम अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करे, और जैसे कोचिंग में बताया जा रहा है वैसे फॉलो करे, तो उसको कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आएगी नहीं। बस उसको बीच में डेविएशन से बचना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस वगैरह आती हैं तो वो दिक्कत दे देती है। और रही बात क्लास 12 की, तो क्लास 12 स्टूडेंट ने अगर 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा मतलब ढंग से, तो उसको क्या करना चाहिए, 12th में मतलब अपनी नॉर्मल प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, जैसे मतलब 11th स्टूडेंट करेगा 12th में आके। बट उसको बीच बीच में टाइम निकालना चाहिए, जैसे जिस दिन छुट्टी मिलती है या फिर जिस दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उस एक्स्ट्रा टाइम में उसको वो 11th वाला पोर्शन कवर करना चाहिए जो उसने पहले नहीं पढ़ा। और ऐसे करते करते और एटलीस्ट वो 50-60% पूरे साल में कवर कर लेगा 11th का, और पूरी 12th कवर कर लेगा, तो उसकी 12th भी पूरी हो जाएगी और 11th भी अच्छी खासी हो जाएगी, तो इससे अच्छा स्कोर कर पाएगा वो। और अगर रही बात ड्रॉपर की, तो ड्रॉपर को आई गेस 11th-12th में थोड़ी बहुत तो नॉलेज आ चुकी होती है, सो वो इन सब चीजों से थोड़ा कंफर्टेबल हो चुका होता है, मतलब जो टर्म्स वगैरह होते हैं जो, तो उससे कंफर्टेबल हो चुका होता है। तो 1 साल इनफ है प्रिपरेशन के लिए, ड्रॉपर के लिए। और उसमें बस उसको जैसा मतलब जैसे जो उसने बैच ज्वाइन करा या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन की है, तो उसमें जैसे बताया जा रहा है बस उसको वही फॉलो करना है, और लास्ट में हाँ टेस्ट वगैरह देने अच्छे से, बस इतना मेरे ख्याल से काफी होगा। आई होप जो आपने एडवाइस दिया वो फॉलो करें 11th 12th और रिपीटर्स के बच्चे। तो आप अभी आप कॉलेज में हो, तो आपको कैसा लग रहा है कॉलेज में आके? 2 साल प्रिपरेशन कर लिया, आप कॉलेज में कैसा लग रहा है? सो कॉलेज में तो काफी अच्छा लग रहा है, बट अब तो आदत हो गई है ऑफ कोर्स कॉलेज की। और मतलब काफी हेक्टिक है, ये तो है, मेडिकल प्रोफेशन में काफी ज्यादा मतलब प्रेशर डालते हैं टीचर्स जो होते हैं, काफी सारा मतलब पढ़ना होता है। तो अभी यहाँ पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगा रहता है, और बट पढ़ाई हो नहीं पाती, दिक्कत यही है। मतलब हो तो होता ही है, मतलब काफी सारा पढ़ना होता है।
और नीट में ये था कि सब कुछ सारा कंटेंट एक जगह पे मिलता है, और मतलब इस मेडिकल प्रोफेशन में जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पे अलग अलग बुक से पढ़ना पड़ता है, सो वो एक थोड़ा सा हेक्टिक काम हो जाता बहुत सारे रेफरेंसेस अब आ जाते हैं, एक से नहीं काम होने वाला। तो है। फिर तो फिर आपका कोई ऐसा ड्रीम है कि आप क्या करोगे आगे, कोई स्पेशलाइजेशन जो आपको बहुत पसंद है, आपको वही करनी है? वैसे मेरा जो इंटरेस्ट है वो है रेडियोलॉजी में, तो मैं तो उसमें जाना चाहता हूँ, बट डिपेंड करता है, आगे एग्जाम भी होगा, नेक्स्ट एग्जाम होगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है, बट मैं ट्राई करूंगा रेडियोलॉजी मतलब चूज करने का। ओके, सो व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट द एग्जाम्पल लैब? तो एग्जाम्पल लैब की अगर मैं बात करूँ, सो उसमें बाकी से क्या डिफरेंस है कि जो नीट के टॉपर्स हैं उनसे पढ़ने को मिलेगा एक स्टूडेंट को, ठीक है। और उसके अलावा जो नोट्स बनाए गए हैं एक टॉपर ने ही बनाया है, सो वो टॉपर ने बनाया है तो उसको पता है कि क्या आता है एग्जाम में, और कितना मतलब कितना लिखना चाहिए उसको, कि नोट्स मतलब ज्यादा बड़े भी ना हो और ज्यादा छोटे भी ना हो, और सब कुछ कवर हो जाए उसमें। सो वो चीज अच्छी हो जाती है नोट्स की। और ऑफ कोर्स जो मतलब पढ़ाएगा, अगर टॉपर पढ़ा रहा है तो उसमें ये फायदा होगा कि वो सिर्फ उस पर ज्यादा फोकस करेगा जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने खुद एग्जाम दिया है। और टीचर जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ा देते हैं, बात ही हो जाती है, मतलब वो थोड़ा बियॉन्ड एनसीईआरटी चल जाते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो फिर स्टूडेंट थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। और जब टॉपर पढ़ाएगा तो वो जानता है कि उसने एग्जाम दिया, तो देखता है कि हाँ वो किस कहाँ पे ज्यादा डीप जाती है एनसीईआरटी से एग्जाम वाले, और कहाँ पे वो ऊपर ऊपर से मतलब एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हैं, तो वो उस हिसाब से पढ़ाएगा। और नोट्स का भी ऑफ कोर्स वही सेम चीज, बाकी सब तो वही वही अगर आप टॉपर से सीखो आपको ज्यादा बेटर पता चलेगा, क्योंकि वो आप ही की एज का, आपको ज्यादा समझ में आएगा उससे। तो फिर आपका फाइनली कोई लास्ट मैसेजेस जो नीट एस्पिरेंट्स है जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, फाइनल मैसेज टू देम? तो फाइनल मैसेज यही है कि इस टाइम में मतलब ये है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अब ऑनलाइन का टाइम काफी ज्यादा, मतलब ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस करते हैं सब लोग, और ऑनलाइन से ही स्टडी करते हैं, सो डिस्ट्रैक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। तो बस यही है कि कम से कम डिस्ट्रैक्टेड रहो, और ज्यादा डीप में मत सोचो कि आगे क्या होगा, प्रेजेंट पे सोचो, और जो अभी टाइम है उसमें उसका बेस्ट आउटपुट निकालने की कोशिश करो, और उसमें मतलब बेस्ट अपनी प्रिपरेशन करो, और डेली टारगेट्स पे काम करो, लाइक आज डिसाइड करो कल क्या करना है, ऐसे करते करते चलो। रिजिड टाइम टेबल बना के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उससे फिर मन नहीं लगता, सो ऐसे करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज टेस्ट देते रहो, और उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसको उसको अच्छे से एनालाइज करो, एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, और उसमें मतलब इस तरह से करोगे तो फिर टेस्ट के स्कोर भी इम्प्रूव करेंगे, और अपनी मिस्टेक्स भी पता चलती रहेंगी, और मतलब टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा कि क्या गलती कर रहा हूँ। Live in the present and make a timetable so that you can follow it. So with this, we come to an end of our interview. So thank you, Dr. Aditya. It was great interacting with you. We hope that students have learned a lot of things from this session and will surely implement all these tips and guidelines in their preparation. It was very enlightening interview. Thank you for making time for the students today. We wish you very best for the future. थैंक यू Thank you. मैम।